everyone, here we are with another Power Pack session of Legal Current Affairs जो हर मंडे आता ही आता है. तो yes, we are here with another 3 major important updates जो हुई हैं last week में. तो first कि there is a reformation with respect to tribunals. एक reform bill आया है with 2026 के लिए, right? कि ट्रिब्यूनल्स में कौन कौन से नए नए चेंजेस होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, हाउ द वैकेंसीज और इन सब का डिले था. तो वाई इट वाज नीडेड? बिकॉज देयर वाज वैकेंसीज, डिले थी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपेंडेंस था ऑन गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, राइट. एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस था, इनकंसिस्टेंट थी फंक्शनिंग, लार्ज केस पेंडेंसी ऑफ कोर्स. तो ये तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही विद रिस्पेक्ट टू इवन द कोर्ट्स एज वेल. ठीक है, तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कोर्ट एंड अ ट्रिब्यूनल. ठीक है, व्हाट हैपेंड? द ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल 2026 वाज पास्ड बाय लोक सभा ऑन 10th of August 2026 and Rajya Sabha on 11th of August 2026, subsequently receiving presidential assent to become Tribunals Reform Act 2026. ठीक है, the headline reforms and the creation of National Tribunals Commission (NTCs) oversees India tribunal system. Then what the National Tribunal Commission (NTC) ने क्या क्या oversee किया? What the NTC will oversee, the commission will manage appointments. जो appointments होती हैं with respect to the tribunals, उनके administration को वो देखेंगे. तो administration performance evaluation, complaints and overall functioning majorly the tribunals, right? So NTC is going to look forward that, moving away from independence on different government ministries. So यहाँ पे डिपेंडेंसी जो थी विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज वो मिटा दी. ठीक है, देन द कॉन्स्टिट्यूशन एंगल अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल इंडिपेंडेंस और ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस को देखा जा सकता है. ट्रिब्यूनल एक्सरसाइज जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल फंक्शंस, राइट. तो दे परफॉर्म दीज फंक्शंस. हैवी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट्स एंड टेन्योर कैन थ्रेटन जुडिशियल इंडिपेंडेंस. तो क्या होता है जब अपॉइंटमेंट्स हो रही होती हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा वो हो जाता है, एग्जीक्यूटिव थोड़े ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं. सो दे सेपरेट ही कर दिया उस चीज़ को विथ रिस्पेक्ट टू दैट. सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली रिकमेंड भी किया है कि इंडिपेंडेंट एनटीसी होनी ही चाहिए. रिकमेंडेशन नाउ फाइनली हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, राइट. देन हमने पढ़ा था कि केरलम होने वाला है एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर, हाउ व्हाट इज़ गोइंग ऑन. पार्लियामेंट क्लियर्ड द केरला अल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026, changing the state's official name to Keralam, the Malayalam name reflecting the state's linguistic identity. So being Kerala has predominantly Malayalam people living there, right? So dominate है वहाँ पे उन चीज़ का, उन लोगों का, right? So Malayalam is the language of Kerala, right? So they wanted something of their own language, Keralam, that is it. Lok Sabha passed it on 11th August 2026. Rajya Sabha subsequently approved it. In June 2024, Kerala Legislative Assembly passes resolution. ठीक है, उसके बाद Feb 2026 में Union Cabinet approves the proposal. फिर Article 3 process हुआ, President refers proposal. ठीक है, Kerala Assembly. August 2026 में Parliament passes the bill. Kerala becomes Keralam. So now we should start calling it as Keralam. Just Orissa happened, right? Article 3, the big clad point is here. What Article 3 says, Parliament has the power to alter the area, boundaries or name of a state. तो आज जब आप Article 3 पढ़ते हो तो Article 1, 2, 3 basically talks about the union and the territories, right? Union and the states. Does the state have a veto? No, the state legislature's opinion is important, but now not binding on Parliament. The ultimate legislative power belongs to Parliament. Who is the supreme? Parliament. Why it is supreme? Because it is people, elected people. Sitting there, plus some government people as well, that as we know, lower house and the upper house. Kerala name change is live. Textbook example of Article 3 in action. Mines and Minerals MMDR Amendment Bill 2026, जिसमें दोनों हाउसेस से वोट्स आ गए हैं.
The bill changes the framework governing taxes, cesses and levies on mineral rights and mineral bearing lands, restricting states' ability to introduce new levies. तो ये restriction है on the state, right? Government's argument है इसमें कि different state charges create unpredictable costs, और जो investors हैं उनकी भी uncertainty हो जाती है. A uniform national framework increases predictability and encourages investment. States concern है यहाँ पे कि mineral rich states होने चाहिए like Jharkhand, Odisha, Kerala depend heavily on mining revenue. Restricting levies reduces their fiscal autonomy over resources in their own territory. The Supreme Court connection with MADA versus SAIL. In 2024 there was a landmark judgment, a 9-judge bench constitution थी with respect to MADA versus SAIL. Judgment was 8:1 majority. The majority held कि royalty does not equals to tax. Royalty जो है वो paid by mining operators is not a tax. States have taxing power, constitutional authority to impose taxes on mineral bearing lands. Why it matters? क्योंकि it's viewed directly against the constitutional backdrop. Parliament has now passed a law that restricts states' practical ability to introduce new mineral related taxes. क्या ट्रिगर कर रहा है ये फ्रेश डिबेट ट्रिगर कर रहा है अबाउट द बैलेंस बिटवीन यूनियन यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेट फिस्कल ऑटोनॉमी. सो आप ये यूनियन की पावर्स होती हैं कुछ, एक स्टेट की पावर्स होती हैं, राइट? तो यहाँ पे वो इनके बीच में अनइक्वल सा मामला चल रहा है, राइट? Jharkhand CM Hemant Soren urged reconsideration, citing an estimated 7,110 crore annually from Jharkhand's mineral bearing lands at stake. So this is going on. The constitutional architecture of mining is union list and state list. अब union list में भी एक entry है, state list में भी एक entry है. तो यूजुअली यूनियन लिस्ट प्रिवेल करती है हमेशा, ठीक है? हमेशा यूनियन लिस्ट प्रिवेल करती है. सो regulation of mines and mineral development to the extent of Parliament declares such regulation expedient in public interest, whereas regulation of mines and mineral development subject to union list. Entry 54 states have residual power and it is subordinate to Parliament's declaration of public interest. Pushes this built-in center-state relationship further towards central uniformity. Or at the cost of state revenue autonomy, which is precisely why mineral-rich states are protesting. क्योंकि of course union list को हम obviously constitution is giving the power always to the union list, but again that is harming the central uniformity between the state relations and the union. That's why states have come up with respect to the against this. The constitutional pattern why these three bill connects. Tribunal reforms, judicial independence, Kerala state reorganization, and federalism plus legislative powers with respect to MMDR amendment. So these are the CLAT take points. Tribunal reforms, major headers, Kerala MMDR. This is all. This is the roundup with respect to your legal current affairs. That is all from my end. I really hope you like the session. Do like, subscribe, and stay tuned with respect to CLAT preparation. Thank you so much. Bye-bye. Take care.